Hello everyone, my name is Rajan. Thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap on the bell icon to get my future videos updates regularly. दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है, मैं वीडियोस बनाता हूँ फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स पे, और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसका कंटेंट का पहला जो पार्ट होता है वो मैं उसको हिंदी लैंग्वेज में बोलता हूँ, फिर सेम कंटेंट को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में दोहराता हूँ ताकि आपको टिप्स तो मिले ही, साथ ही साथ आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी हेल्प मिले। So guys, like you know, I make videos on flirting and dating tips. Besides teaching you flirting and dating tips for free, I make it a point to deliver a content first in Hindi language, then I follow it up in English language in order for you to learn spoken language as well, besides teaching you flirting and dating tips for free. So without further ado, let's get into our today's video. First in Hindi language. कई बार क्या होता है, चलो मैंने आपको दुनिया भर की टिप्स और ट्रिक्स में सिखा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, आप लोग भी पक चुके होंगे या सीख चुके होंगे, है ना। तो अब बात होती है कि भाई उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया हमने, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है हमारे पास कि जो हमारा टैलेंट है, जो हमने कुछ सीखा है, उसको शोकेस करने का टाइम ही नहीं मिलता हमको। फॉर एग्जाम्पल भाई, हमें बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत लड़की नज़र आई, है ना, लेकिन वो चिड़िया की तरह फुर होगी 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में फुर हो गई वो। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? हमको कुछ नहीं करना भाई, वही मैं टिप्स से आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? ऐसी स्थिति तब बनती है, मान लो आप सबवे में वेट कर रहे हो मेट्रो ट्रेन का, या आप सपोज करो बस स्टॉप पे हो, बस स्टॉप पे आप बस का वेट कर रहे हो, या कहीं मॉल में हो, कहीं पब्लिक गैदरिंग में हो, और अचानक से जो आपको लड़की पसंद आई, बहुत खूबसूरत है वो, है ना, लेकिन वो उसको वहाँ से जाना पड़ा। या तो वो बस में बैठ के फुर होगी, 9-11 होगी, या वो मेट्रो में बैठ के मेट्रो के पता नहीं कौन से स्टेशन में, या बस कौन से नंबर की बस पकड़ के कौन से स्टेशन में उतरेगी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, 134 करोड़, और आप बात करो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो इतनी पॉपुलेटेड शहर हैं ये। अगर इनमें आदमी का ही नहीं पता लगता भाई कौन क्या कहाँ से आया है, तो लड़की को आप कैसे ट्रेस करोगे? उसकी लोकेशन ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आपको उसका घर का एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं मालूम है तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह कोई आते हैं और उसको अपना पर्सनल व्हीकल में भी लेके 9-11 हो जाते हैं, और फिर आप बगले झाँकते हो, फिर रात को आपको नींद नहीं आती है, फिर आप बोलते हो भाई, सोचते हो काश 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 वो लड़की से मैंने बात करी होती, उसका फ़ोन नंबर, कम से कम नाम ही पूछ लेता यार, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कहीं तो ढूंढ लेता उसको मैं, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको। तो मतलब एक कसक सी आपके सीने में वहीं दब जाती है। तो ऐसा ना होए, इसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरे को भी खाली आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। मुझे कोई बेइंतहा खूबसूरत लड़की नजर आई, मैं सोचा यार उससे बात करूंगा, लेकिन अचानक से बस पकड़ के कहाँ निकल गई भगवान जाने। तो ऐसा ना हो, हमें पहले से तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया है। तैयारी क्या करना है आपको, एक सेंटर पेज लेना है रजिस्टर में से, कॉपी में से, ठीक है, उसका पेज फाड़ के उसमें छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, उसके बिट्स ऑफ पेपर्स बनाने हैं छोटे छोटे, उन पे सब पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दो पेन से, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपको लिखना है, नाम वगैरह लिख दो, और 50-60 बना लो छोटे छोटे पर्चियाँ, इतनी पर्चियाँ बना लो। और जब भी आप निकलते हो पब्लिक प्लेस में या कहीं भी बाहर निकलते हो, तो कोशिश करो कि वो 5, 6, 8, 10 पर्चियाँ आपकी जेब में हो हमेशा, ताकि इस स्थिति के लिए, कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि मान लो यार आप बस में बैठे हो, कोई लड़की दिख गई आपको, और आपने सोचा मैं उससे बात करूँगा, आप लाइन भी दे रहे हो, वो भी लाइन दे रही है, लेकिन वो बस से उतर जाती है और वो अपने स्टेशन पे कहीं और चली जाती है, और वो फुर हो जाती है। तो ऐसी नौबत ना आए, तो आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, वो आई कांटेक्ट वगैरह भी भूल जाओ, वो सब जरूरी है वो भी, लेकिन वो ऐसी स्थिति में पर्चियाँ काम आएंगी। तो पर्ची आप लेके चलो। सपोज अगर आपको लगता है कि लड़की जाने वाली है, अंदाज़ा हो जाता है, पहले तो आपको वही करना है जो मैंने आपको सिखाया, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। और अगर आप लड़की से बात करो तो आप
एक तो आपके स्माइल होनी चाहिए फेस पे, हमेशा एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, मतलब ऐसा हैवानियत वाली ऐसी फीलिंग लड़की को डरावा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, एज अ कॉम्प्लीमेंट लगना चाहिए उसको। तो आप उसकी थोड़ी सी तारीफ करो, हाय हेलो करो और उसको पर्ची पकड़ा दो बस। तो पर्ची पकड़ाने से वो ले लेगी। इससे लड़कियों को ये सब पर्ची वगैरह, बहुत लव लेटर्स वगैरह पसंद है। भले ये 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ज़माने में, लेकिन लड़कियों को आज भी लव लेटर्स पसंद होते हैं। तो पर्ची दोगे तो उसको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने की, देखो बहुत से लोग बोलेंगे कि विजिटिंग कार्ड भी तो छपवा सकते हैं। हाँ, विजिटिंग कार्ड भी मेरे भाई आप छपवा सकते हो और विजिटिंग कार्ड भी कर सकते हो, लेकिन वो इतना रोमांटिक नहीं लगेगा। उसके दो कारण है। पहला तो ये है, उसमें आपकी डेजिग्नेशन लिखी होती है, आप लॉयर हो या डॉक्टर हो, फलाना ढिमकाना जो भी हो, है ना। उसमें आपकी हो सकता है एड्रेस भी लिखा हुआ हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, तो कॉन्फिडेंशियल नहीं रह जाती चीज़ें ना। और मैं नहीं बोलूँगा कि आप किसी स्ट्रेंजर को, भले ही आपको पहली नज़र में उससे प्यार हो गया, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि आप उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो पहली, और जबकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दो किसी को। तो पर्चियाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा रोमांटिक, और रोमांटिक भी होती है। दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ, ये ज़्यादा रोमांटिक भी होती है। रोमांटिक इन द सेंस, अब लड़की अप्रिशिएट करेगी आपको कि आपने इतनी मेहनत करी। उसको मालूम है कि मुझे मालूम था कि 15-20 सेकंड ही थे, मैं चली जाती मेट्रो से उतर के या ट्रेन से उतर के या जल्दीबाजी में कहीं भी, और बंदे ने मेहनत करके, उसको मालूम था निकलने वाली, फटाफट कहीं से पेन का अरेंजमेंट किया, कहीं से कागज़ का अरेंजमेंट किया, फुर्ती दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, और फटाफट नोट। उसको थोड़ी ना मालूम पर्ची आप पहले से जेब में डाल के घूम रहे हो, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और अपने फटाफट उसको मेहनत करके पर्ची थमाई उसको। तो लड़की को लगेगा हाँ भाई, जेन्युइन लगोगे आप उसको, एक तरीके से कि सच्चा प्यार लगेगा उसको, कि बंदा जेन्युइनली मुझे प्यार करता है, इसलिए उसने इतना जोखिम, इतनी मेहनत करी ये सब पर्चियाँ का अरेंजमेंट करने में, पेन का फटाफट लिखने में और मुझे पकड़ाने में। तो वो 80% चांस है कि वो आपकी पर्ची पकड़ लेगी। भले ही आपको कांटेक्ट करे ना करे, वो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन वो कहावत है ना, एक इंग्लिश में भी क्या हिंदी में भी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ तो हासिल हो जाए, है ना। अगर वो चली जाती तो फिर आप खून के आंसू रोते हैं रात को, फिर सपने में सोचते यार काश वो लड़की मेरे को मिल जाती, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, मेरी बीवी बन जाती, मेरे बच्चों की माँ बन जाती, आय हाय कितनी प्यारी थी वो। और वो सब में फिर आप सोचते रहोगे, हो सकता है ज़िंदगी भर सोचते रहो, आपको दोबारा मिले ही ना वो। तो ऐसा करना है ना। चलो अब यही कंटेंट हम इंग्लिश लैंग्वेज में परोसते हैं आपको। So guys, in today's video I'll be discussing about there are some instances in life when everything you have learnt, the tips and tricks which I have taught you so many times, it all can go in vain for the mere reason that the girl which you are eyeing, suppose if you happen to see a beautiful, gorgeous, drop dead gorgeous girl, stunning beauty, you happen to see that girl in a subway or a metro station or at a bus stop or inside a public transport, and in a blink of an eye that girl vanished, say like in 15 seconds, 20 seconds, 1 minute or 2 minutes. You have gazed her, but the next minute you saw and she wasn't there. So in such type of situations, you happen to repent the situation, because then you somewhere in deep in your mind, when you go to bed the same day, you will realize that, oh, I should have approached her in the given period of time, and I don't know God if we will ever meet again. And that girl was so irresistible, I cannot sleep without her. But the dilemma is that you might not see her again, because talking about in India, the metropolitan cities like Bangalore, Delhi, Mumbai, so these are such crowded place, and India being one of the largest populated countries over the world, and it is quite possible that you will never see that girl again, because you never know which number bus she has
boarded and where was her stop, and you don't know her address or which metro station she she got down. So there could be many instances, if suppose maybe her parents or relatives or anyone uh, came in uh, that romantic need of hour, and they took her away from away from you. So these kind of things do happen with everyone, including me. But we have to prepare ourselves in advance, so that next time such situations happens in our life, so we don't have to repent at least. So for this mere reason I made this video. I'll give you some golden tips. Utilizing those tips, you will never repent in your life that that girl has vanished, and now you will weep around the whole life. Where was that girl? And you don't know. At least then you will say that I would have asked her name, and I could have found her, find her in Facebook or WhatsApp or TikTok, anywhere on the social media. But that won't happen. So we have to be, we have to prepare in advance for this sort of situation. What you have to do, guys, is you simply have to take the middle page from a register and make as much as bits and pieces of that paper, and pen down your contact information, name, etc. So that, and always make it a point to carry 5 or 10 slips in your pocket whenever you go in public. So whenever these sort of situations occur in your life, at least you hand over that piece of bits and pieces of piece of paper to her, so that if she is interested enough for you, so she might contact you. So everything remains the same while approaching a girl. My tips and tricks will remain the same. The eye contact, the body language, and your approach and presentation. But if by God's grace, if you are unlucky and she has to go, so at least you can hand over that bits and pieces of paper to her where your contact information is. So it might come in handy, because she might contact you, even if it's 2 or 3% chance that she will contact you. So it could happen, and who knows, she might become your girlfriend, your wife, or the baby or mother of your babies, which you were dreaming, or you have dreamt all over these years when you saw that mystery girl being vanished. So some guys will tell me here that we have visiting cards and they are better than the bits and pieces of paper. So my dear friends, the simple answer for this is they are not. Because there are two reasons why bits and pieces of paper or the slip is a better option than the visiting card. Is because, first of all, in visiting card you have, besides having your contact information, you also have your designation mentioned, or the name of your company. For example, if you are a lawyer, doctor, or any entrepreneur, and there might be the confidential information mentioned on your visiting card, and you do not want to be, you wouldn't want any strange person to know these confidential information. So if you talk about privacy, it gives you privacy, and it also girls also kind of have that somewhere in back of the mind that, yeah, oh, this guy is a lawyer or he is a doctor, so he's kind of studious person. So she might have some pre knowledge about you, and that might not be good option. So secondly, the visiting card doesn't look as romantic as the piece of paper, because girl will realize that, oh, this guy has taken some pain, because or he has done some hard work, because
and she will also think that he was such a smart guy. He only had that 15 or 20 seconds or a minute to react, and he reacted uh, splendidly well to hand over me the piece of paper, because uh, within that set limited period of time he had to arrange the piece of paper, the pen, and then he had to take that courage to hand it over to me. So in a way it is very romantic and as well as filmy. So even in this 21st century, I know it's the time of Instagram, WhatsApp, social media, etc. But the girls even today like the love letter or the slip and the piece of paper. She likes it more because they are more romantic. So next time, make sure you carry 5 or 6 slips in your pocket of that piece of paper, so whenever you get that opportunity. And then everything remains the same, which I taught you in my previous videos. The eye contact, the smile, flirtatious smile, and your confidence and how you present yourself remains the same. But in case if a girl is about to leave, at least you can hand over uh, the piece of paper, especially in where especially if she is traveling with you, maybe in a bus or a metro, because a bus or a metro or a train will not stop for your romantic stories, you know. So make sure you follow these tips, guys. So comment me below how was today's video. I hope you enjoyed my video and the tips, the golden tips I provided you today. So that's it for today, guys. See you in my next video. Till then, take care and goodbye.